From today, from 6th of March to 15th of March, we would be basically having 10 days. And from today, from the roadmap session, we would be going further to networking session tomorrow. Then we would be having third session on a different other topic, right? That might basically take you up to the Linux level, and then basically how to run Linux, how to basically run different virtual machines, install virtual machines, and then how to basically use Linux to hack into a particular Windows, right? There are 2 methods or 3 methods, 10 methods, how you can learn those methods, right? And then basically how you could do social media hacking, right? How hackers usually do social media hacking, how hackers usually hack into websites, and how you can get paid for that particular thing, right? So we would be talking about all these things in the next upcoming 10 days, right, including today. And we would be basically talking about a lot of things, right? So in case if you have any doubt in any of the field in security, you can let us know and we will basically solve your doubt directly, right? So we have a lot of things, we have like done a lot of things in the last while, and obviously I want to basically start with a very small presentation over here, right? We would be basically going ahead with a presentation over here that we have created, right, so that you can see how the things are basically going. So let me just open my presentation, right? Let me just share my screen. Obviously we won't be doing anything theoretically in the upcoming sessions. We would be basically going with very practical aspect, but as today is just a simple introduction session, we can have a little bit of introduction and we can basically talk about how the things are done in basically cybersecurity. We can talk about the roadmap over here. So let me just simply share my screen so that you guys can see the things, right? Okay, so here is my screen and there are still people joining over here. So this is presented by Hackers Villa Cybersecurity, and the series is called as Hack and Slash webinar series, right? We have done a lot of hack and slash webinar series since past 1.5 year. We have been taking free sessions, we have been taking boot camps. Many of the people who are into the group are from our boot camps as well. Many of them are from the previous webinars, many of them are new joinings, right? There are literally 4 to 5 different other groups that are basically fulfilled, and obviously we do different sessions for all the people at different timings, right? This particular group that you are in currently will have the sessions at 6 p.m. every day by me, right? So it's a Hackers with a free guide on ethical hacking, right? If I go further a little bit about us, we have trained more than 500 students in last 2 years. We have conducted more than 120 sessions, that is online. We have conducted online 120 sessions with more than 18 to 20,000 participants all around the world. And not that only, we have also taken offline events. We have been doing around about 50 offline events in last 1 year, and obviously with different organizations, with different communities. For example, Null Meet Delhi, which is a very it's a good and huge conference, if you can say, in Delhi, India, regarding cybersecurity. Then we have been basically collaborated with NCC Delhi, right, to give sessions over there. We have collaborated with different colleges, right? For example, NIET, KIET in Delhi, and many other different colleges and small schools as well, right? So we have been training a lot of students, right? Our main motive is basically to to get people aware about security and how security really works, right? These are our social media handles, which in case you want to follow, you can follow us, right? We are also upcoming with an application, right, which would be launched in just 1 month, right? And in that application, we will be basically getting you some free sessions that are not available anywhere right now, coming up from Hackers Villa, right? And all the recordings of all the free sessions and some of the paid sessions, right? Some glimpses of the paid sessions would be there in the application only, right? So you can just sign up in the application. We would be launching the application in just next 1 month, right? We'll be launching it in mid-April, and it will be available on the Play Store, right? Totally free. So if I go forward, this is me myself, Sanchay, saying I have a very much keen interest in cybersecurity since class 7th and 8th. When I was basically a student of class 7th 8th, I had interest in cybersecurity. Since then, I'm still learning and I'm still growing in cybersecurity. I have around about 8
7 to 8 years of professional experience. I have worked with a lot of cybersecurity researchers of India, which are like the best researchers of India, right? And then I have been a public speaker. I'm a cybersecurity expert, a trainer, and a co-founder of this Hackers Villa community. Not only that, I have been also working with Upgrad and Upgrad Campus, right, as an SME, that is subject matter expert, and a team has been handling the cybersecurity course for Upgrad as well, right? So these are my social media handles, right? You can follow me, or you can, in case if you want to discuss about anything, I go with the username Sanchay official, so you can find me anywhere, and we will be basically interacting over there, right? So basically this particular master class, or this particular series of what I can say sessions that we are having, right, we thought of two options, right? Number one, we thought of having a master class of 10 hours in a day, but that could basically it might happen that you might get suffocated, or you might get exhausted for the whole day, and you then may lose your interest. So then we basically decided to cover it in 10 days, right? So 1 hour each day, so that you guys also have interest, and obviously you guys can sort out which session to attend and which session not to, right? So we can go ahead. This is our Discord channel link, right? In case if you aren't into a Discord channel, you can join the Discord channel right away, because on the Discord channel we basically do a lot of things, and we basically give you a lot of posts. We give you a lot of cybersecurity news and cybersecurity, what's happening in cybersecurity, the write-ups, the cheat sheets, tips and tricks, videos, everything. We basically give the updates over there about cybersecurity as well. So in case you want to join, you can join the Discord channel. It's the link is over here directly, or you can just simply join through the QR code after the session, right? Is my voice lagging for everyone, or is my voice lagging only for Devansh? Let me know in the chats, right? Let me know in the chats if I am audible to everyone. Am I audible to everyone? Please let me know in the chats. So I'm audible to only one person, or like what about 18 other people? So if you guys are not interested to interact, I guess we can end the session right away over here, because I do want to have quite a little interaction over here, right? So that we can talk about different kind of things that you might have, right? Because there are a lot of questions that I keep getting in cybersecurity. That's how to start with security, and how to build security, how to build your career in security, right? And कैसे कैसे अपना security के अंदर आपको अपना धीरे धीरे करके how to learn, basically. That is something which people keep asking, right? So I want to know what do you guys think, and what questions do you have, right, while looking into security, because this is the session on the roadmap of security, and I would be basically giving you a roadmap today, right? So we won't be going into any practical or technical aspect of cybersecurity today, right? I'll be giving you a roadmap. I'll be giving you a basic structure how you can start with cybersecurity. So किसी का भी अगर कोई question होता है इंग्लिश या हिंदी में, anything you can directly ask. I'm also basically allowing the mic access, so in case if somebody wants to open their mic, you are welcome, and please let me just know, right, in case if you have any question. So please go ahead and ask your questions, right? This is the time when you have your questions ready, and then I'll be giving you a basic roadmap in the session after your questions. So what do you guys think? We have over here 22 people, 21 people over here. So 21 people, अगर आपने आज का सेशन ज्वाइन किया है, ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में. यू माइट हैव थॉट एनीथिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी में आप अगर यहाँ आए हो, यू माइट हैव गॉट अ लिटिल बिट इंटरेस्टेड और फैसिनेटेड. सो what fascinates you, and what do you want to do further? Any question that you might have might have been like feeling in your mind, please let me know the questions.
Anyone over here who have any question? OTP accessible by another person. How to avoid this? So as I said, I'm taking questions today on the basis of the roadmap and on the basis of any questions that you might feel in security while starting security. I'm not talking about the technical aspect, but in case if you still have any technical question like OTP accessible by another person, how to avoid this. OTP के लिए अलग अलग तरीके के bugs होते हैं, right? And obviously you cannot avoid it, right? You can only avoid it if you have any two-factor authentication running on your device, right? But in case if you do not have any two-factor authentication or something like that, then obviously अगर website पे support नहीं है 2FA का, and अगर you have like taken all the measures to protect your account, then it is something that you cannot protect, right? Because the bug is in the website, the bug is in the system, the server where OTP is accessible to second person, right? So obviously that is the main thing. You cannot protect yourself if there's a website, like for example if there's a website, let's say Hotstar, and अगर Hotstar को OTP कोई ले पा रहा है, then there's a bug in Hotstar, not your security, right? So obviously that is the thing. So in case if you guys do not want to interact, right, I won't be taking much of your time today, right? I'll be just giving you a simple structure about how to start cybersecurity, right? And then we will end the session. In case if you are interested in asking the questions, interacting, I have given you the mic access. In case if anyone of you might want to interact, right, we can take the session longer. But अगर नहीं है मन किसी का, तो obviously we'll be ending it by giving you a roadmap, right? Want to learn hacking and cybersecurity to be helpful to Indian Army? That's really good, Devansh. For this, I guess you should basically start working for DRDO, right? In case if you give the exam for DRDO और DRDO में जाकर आपका अगर selection हो जाता है, obviously it will take you like 1 year of learning, राइट, DRDO का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए. एंड अगर आप उसमें पास हो जाते हो, देन वर्किंग इन DRDO, इफ़ यू बेसिकली शो अप योर हैकिंग स्किल्स ओवर देयर, देन दे माइट ट्रांसफर यू टू डिफरेंट डिफेंस सर्विसेज, राइट? यू कैन डायरेक्टली गो टू डिफेंस एज वेल, ठीक है? आप डिफेंस सर्विसेज में भी जाकर हैकिंग सीख सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो जस्ट स्टार्ट विद DRDO, राइट, आफ्टर यूर ग्रेजुएटेड, राइट? आई एम नॉट सेइंग बिफोर ग्रेजुएशन, बिकॉज DRDO आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट, you are currently 17, so then you can basically grow up to 20, 21, then you can basically prepare for DRDO, and once you are like good for DRDO and you crack DRDO, I would say that those are the people after 3-4 years of working, they could transfer you to NIA and RAW, because most of the hackers are needed in NIA and RAW. So mostly जो वहाँ पे लोग जाते हैं उनका direct selection नहीं होता है, because those are the people who are report to PM office, right? जो PMO को directly report करते हैं. So वहाँ पे selection प्राइम मिनिस्टर नहीं लेता, वहाँ पे selection कोई दूसरे firms नहीं लेते, right? DRDO से direct selection आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है NIA या फिर रॉ के अंदर. सो इन केस इफ़ यू वांट टू गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट, दैट इज़ समथिंग यू कैन डू, राइट? आई नो 2 or 3 पीपल जो सेम पाथ पे फॉलो करके NIA रॉ के अंदर फिलहाल काम कर रहे हैं, एंड आई हैव कनेक्शंस इन CBI एज वेल. सो it's a really good field if you want to basically go inside hacking for defense. Okay, so any other question if you guys are having, anyone of you, right? How to start, या कुछ चीज़ें feel होती है that you are not able to do this, how to solve the issues of starting into security. Want to learn bug bounty? So Atharva, bug bounty is something which needs rigorous practice, right? In case if you think that you have time, and in case if you think that you have dedication to give yourself at least 2 hours a day, then you can survive in bug bounty. Otherwise a bug bounty में, to be very frank and to be very blunt,
you won't be able to survive in bug bounty. अगर आप सोच रहे हो मैं एक दिन की प्रैक्टिस स्किप कर दूंगा और उसके अगले दिन मैं बग बाउंटी कर लूँगा, देन नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है. बग बाउंटी के अंदर इट टेक्स टाइम and it's basically very much it's a very much time consuming thing as well, but it pays you well, right? Bug bounty needs dedication and desperation, right? So obviously what you have to do, you have to start learning with basic bugs, राइट. आपको सबसे पहले बेसिक बग्स के बारे में जानकारी लेनी है, राइट. व्हाट आर बेसिक बग्स? फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, व्हाट इज एक्सएसएस, व्हाट इज आईडोर, व्हाट इज एक्सएसई, what is CSRF, SSRF. Like you have to basically start learning with these very small bugs कि ये होते क्या हैं, right? And again, when you will be learning these bugs, you will be finding yourself in a very difficult situation that आपको समझ में नहीं आ रहा होगा that कि इसको solve कैसे करूँगा मैं, या फिर ये bug मेरे को समझ में, मतलब मैं इसको सीख तो रहा हूँ, but how do I basically find it in a practical website that is currently live. तो उसके लिए how websites are basically programmed and how websites are basically coded will help you. So if you learn JavaScript, if you learn PHP, SQL, NoSQL, MongoDB, Node.js, React, Ruby on Rails, these are the languages that will be helping you out of bug bounty hunting, right? ये बहुत ज़्यादा help करेगी. Web development is the one thing that helps you very much into bug bounty hunting, but never ever settle for only for web development, because most of the times what happens कि आप bug bounty सीखते सीखते webd में चले जाते हो, and then you basically feel a force कि let me complete webd then I'll come back to bug bounty, but ऐसा कभी हो नहीं सकता. You have to take it parallel. आपको बग बाउंटी के साथ साथ आपको जो आपका this is the thing that we are basically having with bug bounty, we have this particular thing webd, you have to take them parallel, and parallelly आपको इनको लेकर चलना पड़ेगा, right? So you are giving 2 hours a day, where in 1.5 hour or like in 1 hour you are basically learning okay how to exploit this bug, but उसी के साथ साथ आप उसी 1 घंटे में ये भी सीख रहे हो that SQL यूजुअली यूज़ कैसे किया जाता है, राइट? सो यू आर लर्निंग SQL एज वेल, एंड देन यू आर एक्सप्लॉइटिंग इट to basically making it SQL injection or something like that. So these are the things. And then the second thing is you can follow there are various channels, for example Insider PhD, Hackers Exploit, and then there is a channel from NahamSec, and then Stoke. You can follow up or subscribe these YouTube channels. These are free of cost, and obviously you will be getting a lot of information about how to use the tool Burpsuit, which is your one-man army tool for bug bounty hunting, and knowing about how to find the bugs. राइट. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू गो टू पोर्टस्विगर. देयर आर लैब्स फ्रॉम पोर्टस्विगर विच हैव रिगरस practice of 218 labs which are the bestest lab on the internet right now, right? You will be getting those labs, and उस labs में जाकर के आप आराम से practice करो. Once you are done with all the 220 labs, right, I can bet when you go on to the practical world you will be finding bugs, you will start finding bugs. और जब आपको bugs मिलना शुरू हो जाएंगे, right, obviously the practice for labs and everything would take you around 2 to 3 months, and after 3 months you will start getting bounties of $100, $200, $500, $400, and after more 6 months of practical bug bounty hunting, right, जब आपका पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा इस फील्ड में, you will start getting bugs that will pay you $5,000, $6,000, $7,000 every month, राइट. और उसके अगले साल में वो चीज़ एवरी वीक होना शुरू हो जाएगी, एवरी वीक, और इट कुड ऑल्सो हैपन दैट इन एवरी 5 days और 4 days यू आर अर्निंग थ्रू $2,000 और $3,000, राइट. तब अगर आप स्किप करते हो किसी दिन और आप नहीं करना चाहते बग बाउंटी, या आप 1 महीना भी स्किप कर लेते हो, राइट, यू विल बी स्टिल बी एबल टू गेट द बग्स, बिकॉज आपका माइंड सेट अब इतना क्लियर हो चुका है दैट वेयर यू हैव टू गो, right? So that is how you have to find the way in bug bounty hunting. It takes time, it takes discipline, it takes determination and desperation, right? And the best thing about bug bounty is that you do not have to run before money. Money is the byproduct, right? Money is the byproduct. पैसे अपने आप आएंगे. Point is कि आपको bugs ढूंढने में इंटरेस्ट आना चाहिए. If this field fascinates you, then it is for you. Otherwise, if you are money motivated or motivated by the t-shirts or stickers that these bounty people are getting, then आप bug bounty में successful नहीं हो पाओगे. Maybe it would be a short-lived success, but you won't be able to get a huge success out of it, right?
Okay. Any other question regarding security? I'm new to security. Where should I begin? Okay, that is why we did the bootcamp. We did the roadmap session today. So, cybersecurity का एक छोटा सा roadmap है, right? I should not say छोटा, but एक normal अगर आप roadmap लेकर चलते हो तो it's a very not a very big thing to understand. Let me just share my screen and tell you कि आप like how and where you can start. And obviously, many of the people want to start this in free. राइट बहुत सारे लोग ये भी चाहते होंगे कि मैं इसको फ्री में स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर कम से कम पैसों में अगर मेरे को लाइव मेंटोर या फिर अगर कुछ सेशंस मिल जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन फॉर मी, राइट? सो हाउ डू आई स्टार्ट, वेयर डू आई बिगिन, एंड किस तरीके से मैं बग बाउंटी को लेकर चल सकता हूँ अपने साथ में. दिस इज समथिंग you might want to learn, right? Bug bounty hunting, penetration testing, cryptography, steganography, reverse engineering, forensics, and then we have malware analysis, then exploit, binary exploitations, right? How do we learn all these things, right? Where to start? What is that one thing that that is needed to start? Okay, so if you are a very beginner, if you are literally a beginner in this particular field, you have to start with computer networks, not anything else but computer networks. Now doesn't matter कि आप arts field से हो, doesn't matter कि आप science field से हो, commerce field से हो, क्या computer science आपके पास था नहीं था, doesn't matter, right? If you want to start, this is the first thing you need to learn: computer networks. राइट. एंड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स यू नीड टू लर्न कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, what are protocols, right? How the things are basically connected, what are protocols, what are set of rules, what is OSI model, right? What are packets, how the internet is basically working, राइट? उसके साथ साथ किस तरीके से लाइक व्हाट आर टीसीपी पैकेट्स, व्हाट आर यूडीपी पैकेट्स, राइट? व्हाट इज सबनेटिंग, व्हाट इज आईपी एड्रेस, व्हाट इज मैक एड्रेस, हाउ टू कनेक्ट टू राउटर्स, हाउ टू कनेक्ट टू स्विचेस, राइट? कौन सी तार मैं कौन से पोर्ट के अंदर डालूंगा, ये सारी चीज़ें, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन कंप्यूटर नेटवर्क, राइट? एंड इन केस इफ यू वांट टू सी कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, किस तरीके से शुरू होता है, क्या होता है, वी हैव गॉट वन थिंग ओवर हियर, राइट? हमने क्या कर रखा है कि ऑन द यूट्यूब वी हैव अपलोडेड, राइट, हिंदी में we have uploaded these videos for you, right? So you can just search for Hackers Villa on YouTube, and once you basically search for Hackers Villa Cybersecurity, right, you'll basically get the channel on the top, right? So over here Hackers Villa अगर आप search करते हो तो आपको यहाँ पे Hackers Villa मिल जाएगा, and in Hackers Villa we have basically uploaded a lot of videos, out of which यहाँ पे बहुत सारी videos you can see there is a series of 10 videos, right? Part 1 से लेके Part 9 10 तक की videos जाती हैं. So these are basically the series that covers the whole part of your this particular thing called as networking. अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेते हो, रफली इट वुड बी द कंटेंट ऑफ राउंड अबाउट इट्स लाइक 15 minutes or 20 minutes of video. So this would basically go around, there are 10 videos, so 200 minutes, right? roughly 200 minutes तक ही पूरा जाएगा, और इन 200 minutes के अंदर you will be basically understanding the whole concept of networking, right? एकदम depth में detail में तो नहीं है, but obviously this is something that you can still learn, and obviously you can basically get all the things in Hindi that is over here, right? We will be taking up one more playlist of Linux and virtualization, उसको भी हम हिंदी में cover करने वाले थोड़े दिनों में, right? So till the time if you want to learn networking, this is the place where you can learn. Or the other channel that I would recommend is basically to go over and go on to this particular channel called as Networking. It's Network King, where you can see this is the channel with the blue color King logo over here, and you can just click on the link, and इनके आप अगर videos playlist में अगर आप जाते हो, so there is a playlist for full series CCNA having more than 50 videos over here. And अगर आप इनके इस पर्टिकुलर CCNA प्लेलिस्ट के अगर आप खाली शुरुआत के 10 या 12 सेशंस भी देख लोगे, you're good to go. That is all you need for computer networking. Although the content is old, but networking content never changes. That is how much of networking you want to know about computer, this particular cybersecurity. So if you're new, if you don't have money, if you don't want to invest anywhere, these are the guides for you. You can visit our channel for networking, or you can visit networking channel, and over here you can see
the videos, and these videos will help you out. ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है एंड बहुत ज़्यादा theoretical टॉपिक होता है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल skip this particular thing. But the higher you have the knowledge in networks, the higher you will be, the better you will be able to understand and do in cybersecurity. Right? This is something very much needy over here that you can start. एक बार अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग आ जाती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, टू डू ऑल दीज कंप्यूटर नेटवर्किंग थिंग्स इट विल नॉट टेक यू मोर देन 1 week. राइट, अगर मैं रफली एक वीक भी मान के लेता हूँ, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब और इफ़ यू आर बेसिकली वर्किंग, इफ़ यू आर इन स्कूल और इफ़ यू आर इन कॉलेज, राइट, और वर्किंग फॉर सम कंपनी, राइट, अगर आप दिन में थोड़ा सा भी टाइम निकालते हो, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल टेक यू ओनली 1 week टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. राइट, देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स वर्चुअलाइजेशन. आपको उसके बाद क्या करना है, आपको वर्चुअलाइजेशन सीखना है. एंड वर्चुअलाइजेशन में आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न हाउ टू रन वर्चुअल बॉक्स, राइट, और VMware. यू हैव टू लर्न दीज टेक्नोलॉजीज, दैट VMware को किस तरीके से रन किया जाता है या वर्चुअल बॉक्स को किस तरीके से रन किया जाता है. एंड यू माइट फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज अब टॉकिंग अबाउट वर्चुअल बॉक्स एंड VMware ऑन यूट्यूब, राइट. और इसके अंदर आपको इंस्टॉल करनी है काली लिनक्स. Right, you have to install Kali Linux over here. Now this particularly can be installed, and Kali कैसे install करते हैं, Kali की वेबसाइट पे जाकर के Kali डाउनलोड कैसे करते हैं, and obviously then Kali Linux को install कैसे करना है, वो सारी चीज़ें you have to learn with this particular thing, right. And this particularly will not take you more than 2 days, right. It's a very simple topic और ये 2 दिन ही लेगा आपके. Then comes Kali Linux. You need to basically understand what is Kali Linux and how to use Kali Linux. Now Kali Linux is a very broad thing over here. You are literally learning to use a new operating system. We literally have a lot of operating system in today's time, और कौन सा operating system use करना है आज की डेट में वो समझना मुश्किल हो जाता है. राइट, हम विंडोज़ यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए, हम एप्पल यूज़ करते हैं हमारे वर्क पर्पसेस के लिए, हम मैक यूज़ करते हैं, राइट, अपने जैसा मैंने बोला एप्पल वर्क पर्पसेस के लिए, या फिर जब आपको पर्सनलाइजेशन काफ़ी अच्छे से करना होता है और यू माइट हैव लाइक यू माइट बी अ डेवलपर, कोडर और ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, यू माइट हैव बीन यूजिंग मैक एंड एप्पल प्रोडक्ट्स, राइट. बट देन इफ़ आई टेल यू कि हम लिनक्स को क्यों यूज़ करते हैं, वी यूज़ बेसिकली लिनक्स फॉर पुटिंग अप द सर्वर्स. Right, we use Linux for basically there's a very easier form of thing over here which is called as shell, and the shell basically helps you develop the things. ये क्या करता है, ये आपके चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प करता है. इट्स टोटली फास्ट, सो द परफॉर्मेंस इज वेरी मच गुड इन लिनक्स, एंड शेल ऑल्सो हेल्प्स यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. Right, you might try to create a new operating system through Linux, right. So Linux is a very 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 flexible and very good operating system, and बहुत ज़्यादा efficient तरीके से लिखा गया operating system है. So Linux को Kali Linux ले लो, Ubuntu ले लो, कोई भी Linux का version ले लो, right. You have to learn how to use Linux, right. And when I say you have to learn how to use Linux, you have to basically learn the file system of Linux, how it basically works, right. You need to basically learn the commands, कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं. अगर मेरे को कोई फोल्डर के अंदर जाना है तो क्या कमांड होगा उसका टर्मिनल पे डालने के लिए. अगर मेरे को कोई फाइल कॉपी करनी है तो मैं कीबोर्ड से कमांड के थ्रू कैसे करूँगा. अगर मेरे को कोई फाइल पेस्ट करनी है तो कैसे करूँगा, मूव करनी है तो कैसे करूँगा, डिलीट करना है, बनानी है, फोल्डर बनाना है, फोल्डर डिलीट करना है, फाइल के अंदर लिखना है, उसके बाद जितनी चीज़ें करनी है सब कीबोर्ड से करनी है. योर मेन मोटिव शुड बी टू जस्ट remove the mouse from your life when you are using Linux. That is the main motive, right. Can you repeat please which lab you were talking of in respect to bug bounty? It was Portswigger, the company who created Burpsuit, उनके labs है, right. Those labs are free of cost. So this is over here, this is what you have to learn. You have to literally learn Kali Linux, right. And Kali Linux के लिए भी बहुत सारे resources है, right. There are YouTube channels, right. You can go to Hackersploit, you can go to Network Chuck, right. And then you could basically go to the channel that deals with Kali Linux, right. कि Kali Linux से कुछ छोटे मोटे और भी छोटे मोटे हिंदी वीडियोस अवेलेबल हैं YouTube पे जो आपको सिखा देंगे कमांड्स किस तरीके से, कौन सा कमांड कहाँ यूज़ किया जाता है, right. And then there are very much different kind of other resources on this particular thing, right. So this Kali Linux would take you, if I am correct, right, this would basically take you to 3 to 4 weeks to be very very handy, right.
सो द पॉइंट ऑफ 3 to 4 weeks इज दैट इवन इफ यू वांट टू प्ले सम म्यूजिक, अगर आपको एक म्यूजिक भी चलाना है, राइट, अगर एक MP3 फाइल आपके सिस्टम में पड़ी है और आपको डबल क्लिक नहीं करना उस पर, आपको अपना कमांड लाइन खोलना है और लिनक्स के अंदर जाकर के उसको प्ले करना है सिर्फ एक कमांड लिख करके. That is the level of how you have to learn Linux. You have to basically use keyboard for even playing the music, and you have to try playing the games in your Linux instead of the Windows. तो कुछ भी करके how do you do this thing in Linux, how do you do this thing in Linux, you might have to do a lot of Google searches, but that is how you will be learning Kali Linux, right? Kali Linux एक बार जब सीख जाओगे तो that is the thing that is much needed, राइट, दिस इज़ मच नीडेड. और ये 3 चीज़ें वो टेक यू राउंड अबाउट ओवरऑल, अगर मैं मान के चलूँ तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप करते हो तो ये 1 से 2 महीने, 1.5 से 2 महीना, 45 to 50 60 days you will be basically spending in all these things. Now this will create a base for cyber security. जब ये बेस क्लियर हो जाएगा, then comes is the next point where you have to use all the tools present in Kali Linux. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप काली के अंदर जा रहे हो. देर आर मोर देन 500 टूल्स इन काली लिनक्स, मोर देन 500 टूल्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इन काली लिनक्स. यहाँ पे आपको अलग अलग टूल्स ट्राई करके देखने हैं. यू हैव टू ट्राई टू यूज़ nmap, यू हैव टू ट्राई टू यूज़ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, आपको बर्ब सूट यूज़ करके देखना है, आपको बीफ यूज़ करके देखना है, राइट. यू हैव टू ट्राई टू यूज़ वायर शार्क, राइट, वायर शार्क किस तरीके से काम करता है, राइट. देन यू बेसिकली ट्राई, यू हैव टू बेसिकली यूज द टूल्स लाइक आपको दिस पर्टिकुलर टूल दैट ब्रेक्स द पासवर्ड्स, राइट. आपको वो हाइड्रा ब्रूट फोर्सर्स आपको यूज़ करके देखना है, आपको जॉन द रिपर पासवर्ड ब्रेकिंग टूल यूज़ करके देखना है, राइट. एंड देन यू बेसिकली हैव डिफरेंट अदर टूल्स दैट आर देयर इन Kali which you have to use, right. So you have to use every tool. Then you can use information gathering tools like Nessus, right. Then you have tools like Nikto, right. उसके साथ साथ फिर यहाँ पे और भी आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फोका आ जाता है, FOCA. देन देर इज़ ईवल फोका, राइट. there is the tool seeker that helps you basically get the location of anybody. Then you have like Wi-Fi for hacking into Wi-Fi, right, through the brute force manner. Fluxion to hack into a Wi-Fi but without brute force, right. Then basically we have the tools like Zphisher, which basically creates phishing links, right. Then you have Campish, राइट, जो एक आपका कैमरा परमिशंस लेके किसी को भी स्पाई करने के काम में आ सकता है. तो देर आर अ लॉट ऑफ टूल्स ओवर हियर. देर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स ऑल्सो अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल यू हैव द टूल्स लाइक Maltego, you have the tools like ReconNG, right. So there are different other tools that you have to learn, right. So आपको ये सारे मोटे मोटे टूल्स काली के अंदर जा कर के लर्न करने हैं, right. You have to do every tool learning, right. You have to click on every tool, you have to start seeing every tool. अच्छा ये काम कैसे कर रहा है, this is how it is working, this is how it is working, this is how it is working. You have to basically be available on that, right. You have to basically learn all these things, right. सो एज आई सेड, अगर हम यहाँ पे इसको क्लासीफाई करते चले जो हमने यहाँ पर बनाया अभी रोड मैप. सो नंबर 1 नेटवर्किंग, ओवरऑल इट विल टेक यू राउंड अबाउट 2 weeks, राइट. अगर दूसरा हमने बोला आपको वर्चुअलाइजेशन एंड इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ना है, सो वर्चुअलाइजेशन दिस वुड टेक यू हार्डली 2 days टू लर्न, राइट. थर्ड इज बेसिकली लिनक्स. when you want to learn Linux over here, how to use Linux, how to basically install Linux and Linux को कैसे use किया जाता है, this would basically take you 3 to 4 weeks, right. And then basically comes all the tools of Linux, right, tools of Kali Linux, right. And this would also take you around about 2 to 3 weeks over here to learn every tool, right. So this is what you have to learn. And then basically जब आप इतना कर लेते हो, then you are in the very good position to start with cyber security properly, right. Because अब वो टाइम आता है कि आपको क्या cyber security के अंदर सीखना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, right. First part is to learn penetration testing, or basically to learn cryptography, to learn different other things. And the best thing to start is cryptography,
इसके बाद आपको क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज चाहिए, एंड क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज डील्स विद कि किस तरीके से आपके पास लाइक देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कीज, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इन साइफर्स एंड इनक्रिप्शन मॉडल्स होते हैं, उन इनक्रिप्शन मॉडल्स को कैसे ब्रेक किया जाता है, किस तरीके से हैश बनाया जाता है, कोई पासवर्ड वाली फाइल को ब्रेक कैसे किया जाता है, एंड हाउ दिस एल्गोरिथम्स आर वर्किंग, लाइक RS एल्गोरिथम कैसे काम करता है, SH एल्गोरिथम कैसे काम करता है, हाउ SSL इज बेसिकली वर्किंग, and all these things are available onto a channel called as computer file. अगर आप सिंपली कंप्यूटर फाइल के ऊपर सर्च करते हो या फिर अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हो क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटर फाइल, राइट, a lot of videos would be coming from this particular channel computer file, where you will be basically getting every cryptography video that you need to learn, राइट. सो आपका पूरा क्रिप्टोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है यहाँ से. सो यू कैन स्टार्ट विथ क्रिप्टोग्राफी, एंड क्रिप्टोग्राफी के बाद आप जंप कर सकते हो ऑन टू द वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, राइट. आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग को जाकर फिर लर्न कर सकते हो. सो वेब ऐप पेन टेस्टिंग इज बेसिकली समथिंग विच यू नीड फॉर bug hunting, right. So web application pen testing is like one more name for bug bounty hunting, right. सो बग बाउंटी हंटिंग यहाँ पे आप सीखते हो कि बेसिकली वेबसाइट्स पर अटैक कैसे करते हो और वेबसाइट्स के थ्रू पैसा कैसे कमाते हैं, लाइक हैक करने के बाद, एंड किस तरीके से आप इन सेशंस को कंटिन्यू करते हो. सो बग बाउंटी के अंदर आपको क्या करना है, आपको सीखना है बेसिकली डिफरेंट यू हैव टू लर्न द थिंग्स, यू हैव टू लाइक लर्न वेब डेवलपमेंट एज वेल. साथ साथ आपको थोड़ा सा लाइक वेब डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, PHP का नॉलेज होना चाहिए, देन ओनली विल बी एबल टू हैक इनटू द थिंग्स, राइट. उसके साथ साथ फिर आप धीरे धीरे यहाँ से आप जंप कर सकते हो, right, once you basically learn web application pen testing. Obviously cryptography will take you a week, web application pen testing might take you 1 to 2 months directly. ये आपके 7 से 8 हफ्ते भी लगा सकता है, because it's a vast topic. आप पूरा like पोर्ट्सफिगर के सारे labs को जब आप ख़त्म करोगे, it will take time, right. It will take time to do all the labs and everything, right. Then you can basically jump to different other topics, like फिर आप इसके बाद system hacking समझ सकते हो, and system hacking is basically like hacking into the mobile phones and everything, and obviously उसके लिए आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. एंड जब आप इससे विंडोज़ हैक करना सीखोगे, मोबाइल हैक करना सीखोगे, यू विल ऑल्सो लर्न द रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट, बिकॉज यू विल बी नीडिंग रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर इट, राइट. कि किसी भी पर्टिकुलर अगर एप्लीकेशन के अंदर मेरे को अपना पेलोड या मेरे को अपना मेलिशियस फाइल डालना है, तो फिर उसके लिए मैं कैसे करूँगा, तो रिवर्स इंजीनियरिंग. जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग सीख जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल बी गुड इन मालवेयर एनालिसिस एज वेल, राइट. सो यहाँ पे आपको मालवेयर एनालिसिस भी आ जाएगा. सो दैट इज़ बेसिकली अ रोड मैप ऑफ सिक्योरिटी, राइट. पॉइंट इस कि जब आप ये सब कुछ लर्न कर रहे होगे, उसके साथ साथ आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, राइट. द मोर यू विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ दीज थिंग, राइट. आपको साइड बाय साइड बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर अलग अलग टूल्स मिलेंगे जिनके थ्रू उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी होगी. इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी मच नीडेड, एंड जितना ज़्यादा आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है एंड ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, उतना ज़्यादा आप कंपैटिबल हो जाओगे साइबर सिक्योरिटी के, right. So the more you are good in information gathering, the more you are good in computer networking, the more is the possibility to hunt bugs and get bounty, and the more is the possibility to basically learn everything in very quick manner, right. और ये सारी चीज़ें करने में it would take you around about 3 to 4 months, maybe. अगर डेडिकेटेड तरीके से करते हो तो शायद थोड़ा कम टाइम लगे, बट अगर थोड़ा टाइम बीच बीच में स्पेयर करते हो, सो इट माइट टेक अराउंड 3 to 4 months टू कवर एवरीथिंग. और खुद से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इफ़ यू कम विद अ मेंटोर, एंड अगर कोई मेंटोर के थ्रू आपको डायरेक्शन मिल जाती है एंड यू बेसिकली इनरोल इनटू अ कोर्स और समथिंग, तो प्रोसेस बिकम्स स्पीडी, राइट. लर्न पहले भी कर रहे थे, लर्न अब भी कर रहे हो, बट मेंटोर के साथ चीज़ें थोड़ी स्पीड अप हो जाती हैं, और बिना मेंटोर के यू हैव टू लाइक बी ऑन योर ओन डिसिप्लिन, right. So that is how these things work. So for the people who are beginner in cybersecurity, this is a very simple roadmap that you can follow along, right. I have basically broken down in very simple steps over here, right. In everyone's mind there is a pre-built image of remote hacking. In reality, to what extent it is true? Okay, so many of the films and shows like Family Man and all these things have shown कि आप एक फ़ोन कॉल डायरेक्टली ट्रेस करके उसका लोकेशन पता लगा सकते हो, राइट, सामने वाले का. एंड देन देर आर many different images that just it's a very nice question that many people think that remote hacking is true.
And I must say, yeah, remote hacking is true. In case if you have permissions and you have support from the telecom companies, अगर आपके पास CDR रिकॉर्ड्स का अवेलेबिलिटी है तो ऑब्वियसली आप किसी के फ़ोन कॉल से उसका लोकेशन क्या है पता लगा सकते हो, बिकॉज यू नो कि फ़ोन कॉल कौन से पर्टिकुलर नेटवर्क, कौन से पर्टिकुलर सिग्नल टावर पे कनेक्ट हुआ है जा करके, और कौन से लाइक, बिकॉज वी नो दैट एवरी टावर ओवर हियर, अगर आप ध्यान से एक टावर के ऊपर देखोगे तो एक एंटीना के ऊपर देयर इज़ अ डिश, एंड ये डिश 120 डिग्री का एरिया कवर करती है. ऐसे ही 3 डिशेज आर कनेक्टेड टू 1 एंटीना, राइट, और वो 360 डिग्री कवर होता है. सो एवरी डिश हैव अ पर्टिकुलर आईडी ओवर हियर. तो उससे पता लग जाता है कि कौन से लोकेशन, कौन से टावर से पर्टिकुलर पर्सन कनेक्टेड है और किससे कहाँ क्यों बात कर रहा है. नाउ द पॉइंट इज दिस कुड ओनली बी एक्सेसिबल इफ़ यू हैव CDR रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, एंड इफ़ यू बेसिकली हैव द सपोर्ट फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनीज. सो NIA, रॉ या फिर जो CBI लेवल के लोग हैं, दे हैव द एक्सेस टू ऑल दोज थिंग्स, इसलिए वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं. एंड फॉर अस इट इज़ नॉट ट्रू. फॉर रिमोट हैकिंग कि आप किसी के भी पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन में जाकर के उसका फ़ोन हैक कर सकते हो, येस इट इज़ ट्रू. यू कैन लिटरली गो ऑन टू एनी नेटवर्क, और आप उस नेटवर्क पे लाइक किसी भी पर्टिकुलर बाहर, अपने नेटवर्क के बाहर जाकर के, अपने वाईफाई के बाहर जाकर के किसी को भी हैक कर सकते हो. और हैक करने के बाद ऑब्वियसली यू नो यू कैन बेसिकली डू वट एवर यू वॉन्ट, बट दैट रिक्वायर्स कि उसका फ़ोन या उसका पर्टिकुलर डिवाइस वल्नरेबल हो. अगर वल्नरेबल नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते, राइट. एंड मैनी पीपल से कि कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं होती. दिस इज़ ट्रू, नॉट एवरीथिंग इज़ 100% सिक्योर, बट पॉइंट इज़ कि क्या वो वल्नरेबिलिटी अभी तक डिस्कवर हुई. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट एप्पल iPhone 14, सो अगर मैं iPhone 14 की बात करता हूँ, सो iPhone 14 Pro इज़ नॉट वल्नरेबल टू एनी अटैक, राइट. तो ऐसा नहीं है कि वो सिक्योर है. पॉइंट इज़ कि iPhone 14 की वल्नरेबिलिटी इज़ नॉट डिस्कवर्ड येट, राइट. इट्स देयर वुड बी अ टाइम इन द फ्यूचर जब वो डिस्कवर करी जाएगी किसी के थ्रू, एंड देन पीपल वुड बी एक्सप्लॉइटिंग इट, और फिर उसका एक पैच निकल के आएगा जिसके थ्रू आप उसको हैक नहीं कर पाओगे. बट एवरी थिंग इज हैकेबल, राइट. एंड if I go to the extent, right, yes, you can go into the devices, you can hack into them, you can basically try to do anything with them, and you can literally hack into websites. So yeah, remote hacking का जो एक इमेज है माइंड में, वो कहीं ना कहीं सही भी है, बट उतना ईजी नहीं होता जितना ईजी फिल्मों में लगता है, जितना ईजी हम लोग देखते हैं फिल्म्स के अंदर या वेब सीरीज़ के अंदर, TV सीरीज़ के अंदर. इट्स नॉट दैट ईजी, right. और जो the people who have higher access, for example the people who are working for the defense of India, for the defense of the country, they have the rights, they have the APIs that are basically built जो उन्हीं के सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड होते हैं, सो दे कैन डू ऑल द थिंग्स देयर, राइट. सो दे हैव द एक्सेस ओवर देयर. अगर आपको कहीं ना कहीं से उनका एक्सेस, उनके APIs का एक्सेस मिल जाता है, यू माइट बी डूइंग अ वेरी रॉन्ग जॉब ओवर हियर, और यू माइट बी बेसिकली कंसिडर्ड एज अ अनएथिकल यूज़र, or you might also get into the jail for hacking, like because it goes into the black part, right. Also if you hack into something, राइट, जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज़ को सिर्फ नोटिस करते हो और आप उसको सिर्फ सर्वेलेंस में रख रहे हो, दैट इज़ अ ग्रे जोन, राइट. एनी टाइम इफ समबडी आस्क्स यू, यू कैन से नहीं मैंने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, एंड यू कैन कम बैक टू द वाइट जोन कि मैं रिपोर्ट करने वाला था, एंड आई एम अ एथिकल हैकर, समथिंग लाइक दैट. बट जैसे ही आप कोई भी चीज़ ऑल्टर कर देते हो किसी भी सर्वर के अंदर जा कर के, तो आप ब्लैक कैटेगरी में आ जाते हो, राइट. देन नोबडी कैन सेव यू ओवर देयर, राइट. सो दीज आर द बेसिक terminologies that you need to have in your mind, right. और hacking is not limited to Wi-Fi hacking या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का Instagram हैक करना, right. Hacking is the core of hacking lies in reverse engineering, malware hacking, system hacking, and going into the servers, doing RCEs, that is remote code executions, and basically taking the access of root account, that means highest privileged user का access लेकर के चीज़ों को sort out करना, right. So that is the basic thing over here, right. Cybersecurity and ethical hacking is same, yes. Cybersecurity and ethical hacking are one and the same things. Point is कि cybersecurity comes under the umbrella of information security, right. So basically cybersecurity के अंदर ये सारी fields whatever you see over here, this is all cybersecurity, राइट. एथिकल हैकिंग कई बार हम सिस्टम हैकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बट यूजुअली एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी आर वन एंड द सेम थिंग, राइट. But if you see what is a term called as vulnerability assessment,
सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एक अलग टर्म है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक अलग टर्म है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हो, आप देखते हो कि किस किस तरीके से ये वल्नरेबल है, एंड फिर आप उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को पैच करते हो, राइट। एंड देन बेसिकली विद व्हेन यू टॉक अबाउट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो आप लिटरली हैक तो करते ही हो, एंड आप बेसिकली कंपनी के अंदर ही गलतियां तो निकालते ही हो, बट देन यू बेसिकली सिट विद देयर द टीम ऑफ डेवलपर्स, एंड उसके बाद आप उसको पैच भी कराते हो साथ साथ में। यू गिव द रिपोर्ट, यू सॉल्व द थिंग्स, राइट, एंड इफ नेसेसरी यू ऑल्सो हैव टू कॉल अप द ट्रेनिंग पीपल जो उस कंपनी के ऑफिशियल्स को ट्रेन करते हैं। So penetration tester is a particular person who penetrates and who tests and who basically give the services on that thing, and जो हमारा vulnerability assessment है उसका एक अपना अलग चीज़ होता है, राइट। सो यू कैन बी अ पेनिट्रेशन टेस्टर, यू कैन बी अ VAPT पर्सन, राइट। आप फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो आफ्टर साइबर सिक्योरिटी। यू कैन गो फॉर द सर्टिफिकेशंस, हायर लेवल सर्टिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल यू कैन go and do CEH, right, which is a highest or higher like amount of certification, right। obviously जो हमारा CEH का सर्टिफिकेशन है, right, this is like a very prominent higher level certification which might give you good jobs, right। but आज की डेट में CEH certification is also considered as overrated, right। many of the young generation today are basically going with certification called as pentest plus, right। so this pentest plus certification comes from CompTIA, right। CompTIA is basically the company which provides this pentest plus, and ये ECH का जो है ये EC काउंसिल से आता है। दिस इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम EC काउंसिल। सो जस्ट बिकॉज CH के अंदर ज़्यादा चीज़ें अपडेटेड नहीं हो रही थी, एंड ऑब्वियसली ऑल द सर्टिफिकेशंस लाइक दीज आर द सर्टिफिकेशंस दैट गेट एक्सपायर्स आफ्टर एवरी 3 ईयर। सो आपको हर 3 साल के बाद इनको परचेज करके फिर से एग्ज़ाम देके आपको इनको लेना पड़ता है। सो CH का सर्टिफिकेशन will cost you around $1,000, right, and pentest plus का certification will cost you around $400, right। so this is basically the price of the certification। then there is a certification called as OSCP जो आता है offensive security OffSec की साइड से, and this particular certificate, so this is basically coming from offensive security, and OSCP is considered as the most precious certification because ये काफ़ी ज़्यादा tough होता है। not many people are not many people do this particular certification, right, and this is also one of the certification that never expires, and if you have this, people will have respect for you in cybersecurity world, right। so OSCP over here, this basically would cost you $1,500, right, so round about 1.3 to 1.5 lakh rupees, right, for one chance। if you get failed in the exam, आपको फिर से इतने ही पैसे खर्च के आपको फिर से लेना पड़ता है, फिर से ट्राई करना पड़ता है। that is the basic thing, right। so these are some of the basic certifications that you can take and go to the professional world, right। but अगर आपके पास skills अच्छी है, right, if you do not want to do the things in the very corporate wise basis, अगर आपको freelance करना है and if you have skills, you don't need any certification, right। truly if somebody asks me कि आप रिकमेंड करते हो, पर्सनली माई बिलीव इज दैट आई डू नॉट रिकमेंड सर्टिफिकेशंस, राइट। आई रिकमेंड अपस्किलिंग योर सेल्फ, एंड जब आप अपस्किल कर लेते हो इन सर्टिफिकेशंस को आप कभी भी ले सकते हो, right। I know a lot of people in my life who have not taken any certification, and even when I was a little person and when I wanted to learn this thing, when my mentor was there, until the date even my mentor do not have any certification. The people I have met who have done a very great career in cybersecurity do not have any certification. The people who are working in big companies right now, I have connections with them, they are not having any certification. The person who is working in an NIA do not have any security certification. I do not have any certificate in cybersecurity, right? So obviously these are the things that is, the security is basically it works mostly on the skill level, right? But आपको एक अगर बिल्कुल corporate plan बनाना है, then you can go up to CEH and Pentest Plus, OSCP certifications को you can look out, right? That is the things. How ChatGPT can be useful in learning cybersecurity? It's very much useful.
it's very much useful, over there, right? Because ChatGPT lets you, it basically let you, know the things, how it's working and how all the things are working, right? You can ask ChatGPT to basically write a code to patch anything for you, right? So for example, it might happen that you basically are working for some company, and the company basically asks you basically create a code that might, that might attack into excesses or something like that. So let's go on to chat gpt. Let's basically open chat.openai.com. Let's see if I have the access right now. Chat.openai.com. Let's try to basically chat with ChatGPT and ask a question, right? That might give us, that might be a question that we can say, ki just give me something, so that just write a code that I could basically, so that I can prevent some of the attack or something like that. So let me basically attach one of my account over here, and let's see if we could basically get into all these things, right? So let's see. Yeah, so over here we can ask ChatGPT that, just say, consider yourself as a pen tester. You have been given a task to pro- to write a PHP code that protects from, let's say, SQL injection attacks, right? So SQL injection attack, what would be that PHP code, right? Now this particular person, this particular thing would be basically going over and would be basically giving me the guidance of how SQL would work and how these things would work, right? So this is particularly giving me the guidelines, but if you basically change up the prompt right over here, it could also give you the code. Okay, so we are getting a PHP code over here, right? So it's like a simple statement over here, prepare statement, that basically gives me, the protection from SQL, and over here we are getting all these things. So as a tester, as a penetration tester, as a security researcher, ChatGPT helps me a lot, right? And in my daily life, I do use ChatGPT for security, and yeah, it's changing the life of the people over here, right? So this is something I could say, yeah, this is particularly good, right? Does this workshop have certification? Yeah, obviously, right? More career opportunities in cybersecurity. Please tell opportunity in both private and government organizations. So regarding the government organizations, government के अंदर, Indian government sector के अंदर, the this particular thing is limited to cyber forensics in today's time, right? आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ तो cyber forensics is the thing that is basically there, right? And साइबर सिक्योरिटी के जो करियर ऑप्शंस हैं, राइट, सो गवर्नमेंट के अंदर obviously forensics is one of the thing. उसके अलावा steganography और cryptography is also one of the thing in different other government sectors, right? So in India mostly forensics ही रहता है. Forensics की training हो गई, forensics के applications हो गए, CBI and everything. All these people do not know about Kali Linux and how to use these things. वो अभी भी traditional methods follow करते हैं. So they basically hire the people who are modern, new and who knows about forensics, and the analyst basically. तो एनालिस्ट की जो जॉब है और जो फोरेंसिक्स की जॉब है वो जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में. फॉर द प्राइवेट सेक्टर, कमिंग टू द प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के जॉब्स हैं, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के जो है हमारे पास पोस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज़ सीसो, right, which is CISO is basically CISO, which is Chief Investigation Officer, right? And this particular person, what he does is that he basically handles all the security, all the particular kind of security of a company, right? He appoints different other people under him, right? So अगर आपके पास experience है, like if you have the experience of 7 to 8 or 10 years in cyber security, you may apply for as a CISO for a company, right?
सो वहाँ पे कंपनी आपको अलाउ करेगी कि आप अपने नीचे एक टीम क्रिएट करो एंड ऑब्वियसली आप उनको ट्रेन करो एंड देन यू गाइस वुड बी वर्किंग फॉर द सिक्योरिटी, राइट। सो सीसो की काफ़ी एक अच्छी पोस्ट हो जाती है। देन देयर इज़ आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट, right? You might need to basically work for a IT for a IT security as a IT security analyst person, where you need to basically analyze the bugs that might be in your code, in the company's code, and you have to fix it, right? Then you can become a consultant for a company. You can become a cybersecurity engineer. Now this engineer person is a DevSecOps person, जहाँ पे ये क्या करता है कि ये बेसिकली आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसी के अंदर सिक्योरिटी को अप्लाई करते हुए चलते हैं, राइट। सो दीज आर द पीपल हु नो डेवलपमेंट एज वेल एंड दीज आर द पीपल हु ऑल्सो नोज सिक्योरिटी। तो दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके साथ साथ में चलते हैं। देन देर आर एथिकल हैकर्स, ऑब्वियसली पेनिट्रेशन टेस्टर्स, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे थ्रेट रिसर्चर्स आते हैं, राइट, जो थ्रेट रिसर्च करते हैं और जो पोटेंशियल थ्रेट्स आ सकते हैं कंपनी के कोड के ऊपर, उसको अपने कोड को लाइक प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं, काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म लगा करके चलते हैं एंड थ्रेट को रिसर्च करते रहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स वुड बी देयर एंड हाउ दीज थिंग्स कुड बी देयर। सो थ्रेट रिसर्चिंग के साथ साथ यहाँ पे दो चीज़ें और आ जाती है, देयर इज़ अ रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग, राइट। ब्लू टीमिंग का मतलब हो जाता है दैट यू आर वर्किंग फॉर द डिफेंस ऑफ द कंपनी। आप कहीं ना कहीं अपने फायरवॉल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, आप अपने कनेक्शंस को ऐसे बना रहे हो दैट नोबडी कैन पेनिट्रेट इनटू इट। एंड देन रेड टीमिंग इज बेसिकली इफ आई से कि मैं रेड टीमिंग करता हूँ किसी कंपनी के लिए, तो मैं उस कंपनी को हैक करता हूँ, राइट, विद द गिवन परमिशंस, और हैक करने के बाद मैं एक सिक्योरिटी ड्रिल वहाँ पर अप्लाई करता हूँ। बेसिकली आई क्रिएट अ काइंड ऑफ अ सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट, जिसके अंदर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो 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 हमारे पास वर्किंग ऑफिशियल्स हैं, मैं उनको भी हैक करके देखूंगा एंड आई विल ऑल्सो बेसिकली ट्राई टू डू दीज थिंग्स लाइक सोशल इंजीनियरिंग टू सी कि वो कितना डेटा मेरे को दे पाते हैं एंड कितना फंस पाते हैं। देन आई विल बेसिकली क्रिएट अ रिपोर्ट आउट ऑफ इट एंड आई विल बेसिकली ट्राई टू फिक्स दोज थिंग्स टू इन द पर्टिकुलर कंपनी। तो रेड टीमर क्या करता है कि कंपनी को हैक करके उसको सिक्योर करता है, ब्लू टीमर कंपनी का डिफेंस स्ट्रॉन्ग करके उसको हैक करता है, सॉरी प्रोटेक्ट करता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन गो इनसाइड। देन देर आर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स विच आर वेरी मच इन डिमांड इन टुडेज टाइम। आज की डेट में क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स की हद से ज़्यादा डिमांड है। सो इफ़ यू नो व्हाट इज़ क्लाउड सिक्योरिटी, देन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच नीडी इन टुडेज टाइम, right? Companies like hardware.io and then the company like Paya2, right, जो कि पुणे में है फिलहाल, पुणे एंड बैंगलोर, these are the companies that would need IoT hacking or hardware hacking people, right? For the people who are interested in hardware hacking and IoT hacking, you can go into this particular system, right? And the companies like जो security services provide करती हैं, उन companies के लिए you can go with DFIR as a DFIR employee, where you have to basically work as a digital forensics and investigation researching, right? तो basically investigation research तो आप करते ही हो, you also give incident response, राइट, कि अगर डैमेज हो चुका है तो उसके बाद आप क्या रिस्पॉन्स लोगे एंड देन व्हाट काइंड ऑफ हाउ यू विल बी बेसिकली डूइंग और सॉल्विंग द थिंग्स एंड जस्ट ट्रेसिंग द पर्टिकुलर पर्सन विद द फोरेंसिक्स टीम की कहाँ से अटैक आया है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली देयर इन द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर इंडिया में अभी फोरेंसिक्स ही है और एनालिस्ट ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, right? So that is what you can basically do in India, right? About cybersecurity. And in India in today's time there are more than 2 lakh cybersecurity researchers needed every year in India. So ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है in the post COVID era, so अभी बहुत ज़्यादा like बढ़ रहा है। So obviously this is something which is good, right? Does this workshop have certificate? Yes, it have, right? So that is how you could learn cybersecurity, and these were some of the details of cybersecurity जो हमने आपको यहाँ पे अभी provide कर दिया। Any other questions that you might want to ask, or shall we end up the session over here? If you have any other questions, please feel free to type in the chats, or otherwise we can just end the session over here. I'm giving you next 1 minute, right? And if you can type, or you also have the mic access. So if somebody want to ask, please do go ahead, and then in 1 minute we can just end the session over here. Demand is increasing. You can see that अभी जब COVID आया था, COVID से पहले there was the demand of only 74,800. I'm basically telling the correct number because there was a this survey that was done. So
जब कोविड आया, so everything became digital, right? People started using Paytm rather than going to banks. The more data was ट्रैवलिंग थ्रू इंटरनेट. आपके मॉम डैड के पास, या आप अगर छोटे हो, आप अगर 7th 8th क्लास में थे, आपके पास एक फ़ोन आ गया. आपके मॉम डैड अगर टीचर थे तो वो ट्रेडिशनल मेथड छोड़ करके वो भी फ़ोन पे पढ़ाने लग गए, राइट? So obviously these things happen, right? The more data is there, the more security is needed. इसलिए इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग है. इट्स अ वेरी फ्रेश थिंग इन इंडिया राइट नाउ. एंड इस टाइम, दिस इज़ द प्राइम टाइम 2023 and till 2025, this is the prime time when this particular thing will be growing with a very rapid pace, right? So if you can basically if you basically start to learn these things, right, obviously it will basically help you a lot, right? Is chat gpt and cybersecurity same? Obviously not. Should you be pro in coding? No, you don't need to be pro in coding, right? Coding is a very specific part of cybersecurity, but it is not needed in cybersecurity, right? अगर आपको cyber security शुरू करनी है, आप you need not to be a coder, right? You can just start it without coding and you can still get very good results, right? You can just follow the roadmap, right? This roadmap will also be shared onto the YouTube, right? So you can just join, you can just check out the session on YouTube, and obviously you will be knowing about the same thing, right? That is the thing. Okay, so what are most demanding languages for hacking? Depends, right? For example, if you go to penetration testing, the most demanding languages would be Ruby on Rails, Python, Bash, right? And in case if you are basically writing the scripts, then again it would be Bash and Ruby on Rails, right? Then if you basically say that I want to basically go with reverse engineering, then the most demanding languages would be C, C++, Java, and assembly, right? Then if you say I want to basically become a script writer, Python and Bash. And if you want to basically go inside web hacking, right, or web application hacking or bug bounty hunting, then it becomes JavaScript, PHP, SQL, and then Node.js, MongoDB, all these things. So it changes and depends on what kind of hacking you are currently doing. So if you're basically working on any of this particular thing, then you can go on to any like if you can go on to the corresponding language. Is machine learning needed? No. Machine learning, data science not needed for cybersecurity. That's a very different field, right? But machine learning could help cybersecurity, right, as like a domain, right? Machine learning, data science, it basically increases the level of AI, and obviously AI can help us in cybersecurity. So yeah, that is the basic thing. Okay, what are the next days planning timetable? We'll share it in the group itself, right? In the WhatsApp group, you might be connected over there. We will share the content for the next 9 days that we will be having, right? Because from tomorrow's 6 p.m., right, irrespective of how many people are joining, we'll start the session at 6, and obviously we will be having many topics, right? And that would be practical and live, right? So obviously we will share that by tonight onto the WhatsApp group directly, right? So let me also share my screen once again to tell you about more about our organization, right? And obviously what we are offering you rather than the free sessions, right? About the paid course that we are basically having. Let me also tell you about it, right? And in case if you are not interested to listen, you can just leave the class. But we have also just now launched a new offer, right, for all the middle class people and for all the people who might want to start up the course but are not having a lot of money, right? So we have launched a financial aid offer. Let me also tell you about that, so you can basically you basically know all those things. So these are the topics that we do cover in our course, right? We'll basically share all these things. The whole brochure of the course could be basically shared onto the group itself, right? In case if you want it, right, we can also send you on to the personal messages, right? We basically go with Linux. We do network security, we do Linux, we do cryptography and all these things. We do bug bounty hunting as well. And in our advanced course, everything is basically there, so that we cover everything,
right over there. We also give you some paid premium ebooks. All the sessions are live, and the best part is we basically go with mini batches, right, so that we can go on to the focused learning. We do not make more batches, like bigger batches, like 10 to 15 people, right? That is the basic thing over there. So if I go next, right, obviously this is the market price. If you go in the market for today's date, अगर आज की डेट में मैं बाहर जाकर देखूँ तो 40 से 60,000 is the minimum price for cybersecurity courses. Along with the certifications, they basically could charge you around 80,000, 90,000 rupees as well, right? But what we are basically doing in today's time, हमने master class exclusive launch करी है यहाँ पर, and this master class exclusive जो हम कर रहे हैं, this is basically the program where जो हमारा advanced वाला जो कोर्स है जो 20,000 का है, उसको हम सिर्फ 15,000 के अंदर आपको दे रहे हैं, राइट, विच इज़ एट 25% डिस्काउंट. नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो हैव अ फाइनेंशियल एड ऑप्शन जिसके अंदर यही सेम चीज़ आपको 10,000 रुपीज़ के अंदर पड़ती है, राइट. सो फाइनेंशियल एड बेसिकली गिव्स यू 10,000 ऑल द थिंग्स इन 10,000 रुपीज़ एट 50% डिस्काउंट, राइट. नॉर्मल प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर मास्टर क्लास दैट वी करंटली आर डूइंग फॉर द नेक्स्ट 10 days, राइट, उसके लिए जो प्राइस रहेगा वो 1499 रहेगा. इन केस इफ आई ओपन द वेबसाइट, the current price for the for the particular course over here, let me just, yeah, so the current price for that is 19,999, and 19,999 is like the main price for this particular thing. So यहाँ पर हम लोग जो आपको दे रहे हैं, this is only 14,999, and obviously the financial aid option goes at 50% discount, that is 9,999 only, right. You also have EMI options, so that is what you could basically learn. There are a lot of things that we basically go through with. There are a lot of webinars, boot camps that you basically learn, you will be learning from us, and obviously you will be given a lifetime support from our side, right, that you will be getting after purchasing the course. So in case अगर आपको कभी course purchase करना होता है, you can just come into the talk to the admins of the WhatsApp group. You can ask them the details about the course, about the financial aid. In case you want to talk to me personally, the admins will let me know, and we can arrange a call, right. In case you want to talk to the other people about the security, or in case if you have any question regarding security, you can still ask the admins, and they could connect you with me or with some other mentor so that you can clear your doubts. And obviously you can join the Discord channel for more amazing content, right. So that is all for today. Let's just end the session over here, and now we'll be meeting tomorrow at 6 p.m. for a new topic, right. It would be basically based on computer networking, the basic of networking, what is IP address, what is MAC address, how internet works, and how all these things are basically happening. So according to the roadmap, हम लोग कल पहला session लेंगे, like technically second session, but first session in the learning process, right, computer networking. So thanks a lot, guys. Thanks a lot, everyone, for joining. Thanks a lot for giving your 1 hour over here. Thanks a lot for asking the question, interacting, and being a part of the community, right. So just make sure you guys are practicing every day, you guys are learning every day, right. Thank you guys for joining, and keep hacking.